नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। हम कहीं भी रहें बना लेंगे जगह अपने लिए, हमको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। शख्सियत में आज मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ आधुनिक नृत्य का संगम कुछ यूं किया कि वो खास के साथ साथ आम लोगों में अपनी जगह बना गया। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ कलाकार जयचंद्रन पालजी से। आधुनिक नृत्य भाव, सुर, ताल, लय और थाप का एक अनोखा अंदाज। शास्त्रीयता के साथ आधुनिकता का सुंदर समावेश। एक कलाकार जिसने हिम्मत की लीक से हटकर कुछ नया करने की। हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार जयचंद्रन पालजी की। केरल के छोटे से गांव में वीरमन मेनन और पालाजी करिथियानी अम्मा के घर जन्मे जयचंद्रन को बचपन से नृत्य का शौक रहा। भरतनाट्यम, कथकली, लोक नृत्य और मार्शल आर्ट से जुड़े नृत्य कलारीपयट्टू की बाकायदा शिक्षा ग्रहण की। विदेश जाकर इमलता डांस कंपनी से जुड़े, लेकिन जल्द देश वापस आए और बेंगलोर में कॉन्टेम्पररी डांस स्कूल अट्टाकलरी की स्थापना की। नृत्य को एक नए अंदाज में पेश करने का जुनून जयचंद्रन पालजी को हमेशा से रहा। यही वजह है कि उनकी कोरियोग्राफी में तैयार डांस थीम्स एक नया कलेवर लिए होती है। उनकी प्रस्तुतियों में प्रकृति के साथ साथ मल्टीमीडिया का भरपूर प्रयोग उन्हें सबसे अलग श्रेणी में खड़ा करता है। अपने इस अद्भुत सफर में जयचंद्रन को मौका मिला कई कलाकारों के साथ काम करने का, और इनकी ये कोशिशें संगीत की दुनिया में नए आयाम रच गईं। So a center for performance actually. Oh great. So we are Attakalari also. उनकी कामयाबियां और कुछ नया करने की धुन के चलते बेशुमार अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। जाने क्यों मैं रहूं खोया खोया सा। आज की तारीख में अट्टाकलरी सेंटर फॉर मूवमेंट आर्ट्स के जरिए वो युवाओं को नृत्य की दुनिया से आशना कराने का काम बहुत खूबसूरती से कर रही हैं। है नशा खामखा पलकों में तुम हो, खोलूं तो फिर गुम हो। अब तो कह रहा हूँ सच में मैं नहीं हूँ मेरे बस में, अब तो ऐसे हाँ खामखा रहा ना जाए। बहुत बहुत स्वागत जयचंद्र जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि डांस की, नृत्य की शुरुआत आपकी कैसे हुई? बचपन से हुआ। When I was a child of around 7, 8,
always I used to go and stand in front of the mirror and try to imitate the dance that I've seen in festivals, temples, other places. So ये बहुत खुशी का बात मुझे. So always I used to imitate the dances I have seen. But there was no chance for boys to learn dance in the village. You know, I was in a little village in Kerala. So the first time I have learned dance when I was around 8 or 9 in the school for a folk dance. A lot of boys together, we did a dance for the school annual day. Unfortunately, that year the school annual day didn't happen. So we couldn't dance. So that was my first foray into dance. बचपन से आपने जैसे बताया कि आपको नृत्य का शौक रहा, माता पिता ने कैसे लिया और कौन से खास गुरु रहे जिनसे आपको सीखने का मौका मिला? मैं एक नायर कम्युनिटी से है. ये कम्युनिटी है ऐसा है, ये आयोधन और नृत्य इसमें ये बहुत परफेक्ट होते हैं. Yeah, they really work in this martial art and dance. So my mother always was very interested in dance. So in fact, after an operation, she had to rest, and there was a family function. She got up and danced wildly. We had to stop the function. So she had this passion for dance. I suppose I probably have got a little bit from her, but she was not a professional dancer. So I come from a community of dancers and martial artists. So for me, dance was something which was in me from the beginning. गुरु कौन रहे? My first teacher, मेरा गुरु तो ये कलामंडलम क्षेमावती, पहला गुरु. After that, after completing my graduation in physics, मैं तो चेन्नई गया. उधर धनंजय जी, धनंजय और शांता धनंजय इसके साथ. And उधर advanced studies in Bharatanatyam I took up with Dhananjay. Also Kathakali में कलाक्षेत्र से सीखा. अच्छा, कला क्षेत्र से आप जुड़े रहे? Yeah, Kathakali. Only 3 years, which is for very little for Kathakali. कथकली, ओके. Bharatanatyam, many years I learned, and I did solo performances in Bharatanatyam. कहाँ किए? In Chennai, in London, and I also danced with Dhananjayans and Kalakshetra troops as well. फिर लंदन क्यों चले गए? See, when I went to college only, I started learning dance professionally, which is, I was already 16, 17, and I was very good in studies. So I was always analyzing dance. So मुझे ऐसा लगा ये, for example, I felt like these dance stories are talking about very old time, and I want to talk about my experience, my life, my time. And I wanted to have a language for it. And I've started working with different people, theatre people, Chandralekha, but I couldn't find this contemporary language. I thought maybe this language exists, and it's almost like if there is a wheel, I don't have to reinvent it. I want to use that wheel. So I decided to go to London to study contemporary dance. So this education was very important. And in the contemporary dance school, we were also learning not only contemporary dance, ballet, and I had learned African dance forms, the Brazilian martial art, capoeira, and many other things like Tai Chi. So I started Tangta also, no? Tangta, yes. And I started a company, my own company called Imlata Dance Company. I represented UK. I also in some international choreographic events. And was supported by the British national dance agencies, also Arts Council of England. So that was a good recognition for me. Atakalari ke saath, you just mix up the contemporary dance. So what was the thought behind that? See, भारत में आप देखिए, it's a very rich country with so much traditions. You know, in the state where I'm from, every little region has got its own dance tradition, martial art tradition, ritual theatre. So it's such a rich cultural tradition. But probably due to the colonial rule, some of our traditions did not evolve as we went along. You know, classical traditions so beautiful. But it's almost like a golden box for me. So I want to
think about what are the concepts of body and principles of movement in these forms. How do we make use of this huge civilizational knowledge, civilizational wisdom? So I researched, I experimented with this, then brought the contemporary experiences, improvised, created, experimented, created new language. How critics reacted? Fantastic. In the beginning, there was people didn't fully understand, but as 1 or 2 years went by, people were really kind of warmed to the whole idea, and I think from then it was a very good response. And the audience? Audience, of course, particularly the young people had a gut level reaction. You know, for them, this is them. You know, this is their time. You know, they felt this is how they feel. Probably they didn't have the language to express it, but it was a fantastic response. So there are lots of movement in your dance. So how would you like to define that movements? See, I would say they are earthy, they are soulful, they are also very uniquely individual, you know, so it belongs to the people who create. So in a way, contemporary dance doesn't idealize a body. So you don't, आपके लिए एक अच्छा बॉडी होना है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए, आपके साथ क्या है यूनिक, आपका यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है, ये देखता है. ओके, मेरे पास क्या मूवमेंट्स खास हैं. यस. तो आप उसमें जब बच्चों को चुनते हैं, जब आप उनका सिलेक्शन करते हैं, तो आप उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? मैं ऐसा देखता हूँ, लेकिन आप से एक young person come to learn dance, whether that person has got coordination, sense of music, musicality, sense of space, physical awareness. It is not about what dance he has learned or she has learned. It's about what is the potential. इनको क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं देखता हूँ. आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपकी आज तक की जर्नी को बहुत करीब से देखा है. मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपने रिएक्शंस भी हमें दें. आइए देखते हैं. जयचंद्रन से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं ICCR के डायरेक्टर जनरल की ओहदे पर काम कर रहा था. काफ़ी कम मैंने देखा है कि ऐसे यंग प्रोड्यूसर्स हैं या ऐसे यंग क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना हासिल कर लिया हो. और जयचंद्रन मेरे को मिलने के बाद में ऐसा लगा कि उनमें एक ऐसी प्रतिभा है. भारतीय नृत्य शैली को यूज़ करके एक जो नए तरीके का कंटेम्पररी डांस स्टाइल शुरू किया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत प्रशंसा योग्य है, और इसके लिए एक तरह की समझ चाहिए जो उनमें है. तो मैं यही कहूँगा कि जयचंद्रन में प्रतिभा है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये प्रतिभा और निखर करके आगे आती रहेगी. तो उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. नमस्कारम जयचंद्रन जी, कैसे हैं आप? आपके बारे में तो मेरी बहुत ही खूबसूरत मेरी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और आज इस प्रोग्राम के द्वारा मुझे एक मौका मिला है आपको फिर से अपना बहुत सारा आभार जताने का. मुझे आपको बहुत सारी शुभेच्छा देने का मुझे एक मौका मिला है. आपसे मेरी, आपको याद ही है कि मेरी मुलाकात हुई थी पौंडीचेरी में, जब हमने एक बहुत ही खूबसूरत गाना किया था जिसका नाम खामख्वाह था. और वहाँ पर जब आपने आकर जो आप मेरे साथ जो आपने बात की और जो आपके आइडियाज़ थे वो मेरे साथ शेयर किए, और उसके बाद जब आपने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया इतने खूबसूरत डांस मूवमेंट्स में, और आपका जो ग्रुप है अटकलरी, उनके साथ आपने जब वो पूरा का पूरा सजाया उस वीडियो को, तो मैं देख के सचमुच दंग रह गया. आपकी जो कला है, आपका जो टैलेंट है, वो तो बिल्कुल ही किसी को भी गदगद कर दे, किसी को भी बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर दे. लेकिन उससे ज़्यादा जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका एक व्यक्तित्व है, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, मैं बहुत प्रभावित हुआ. स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और मुझे याद करिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा. और यूफोरिया जो है मेरा बैंड है, हम सब आपको बहुत 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 प्यार जताते हैं. गॉड ब्लेस यू. स्टे महफूज. क्या कहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू से? Well, I think it is humbling to hear people appreciate the work one does silently. I think for me, individuals like, the people I know, like in respect, it is actually very gratifying to hear. बातचीत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं. What are the limitations in your dance? Actually, contemporary dance give you
unlimited possibilities. Of course, as an artist, you always want to have a boundary because the picture is beautiful when it is framed, and you don't show the entire world. You choose what are the images that has to come inside your frame, you know, and that particular specific choice, this is very important. Artist के लिए बहुत important है. So restriction is always a freedom. So that way, as an artist, we try to create boundaries. You know, we try to create some kind of restriction so that the things that goes into that frame becomes ever so more powerful. कन्वेंशनल लुक के साथ साथ आपने डिजिटल लुक को भी अपने डांस में, अपने प्रोडक्शंस में, अपने कोरियोग्राफी में जगह दी. क्या सोच रही इसके साथ, मतलब कैसे लोगों को रिलेट करना एक सोच रही? So आप जरा सोचिए हमारा इतिहास हमको महाभारत और रामायण, all these stories has got fantastic images, you know, so very out of the ordinary images. Digital medium is a fantastic thing to close up. You can magnify these images into a much bigger frame. So, but also if you look at the scenography, conventionally it is wood or plaster of Paris or these kind of plastic arts. But today we have the facility to change the scenography with a click of a mouse into, you can bring any other context from any part of the world into the stage area. So the digital medium allows you that. It also gives you interactive, non-linear performance modes. So I'm very fascinated with this because also my education in physics also probably helped that. ऐसे आपके बहुत से डांस प्रोडक्शंस रहे हैं. कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एंड कौन सा बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहा? See, it's very difficult. It's almost like asking somebody to change, somebody to select one of the child among the many children one have. You know, it's quite Nagarika? tough. Nagarika is a kind of a research project. That is a digitally constructed a project where we have researched with some of the most important masters of Bharatanatyam and Kalaripayattu. And we have almost 140 hours of footage and then edited down to 5-6 hours in an interactive digital medium. So you can find out each of the movement and get the explanation from the master. But a couple of our recent production, for example, Maithwani, Echoes of the Body, or Athara Chakra, a dance log. So these productions are unique because I think one was completely away from digital technology, only using body. The other one, on the other hand, we went to all the monuments like Chidambaram Temple, Vaijisharan Koil, Qutub Minar, Humayun's tomb, you know, you name it, many places, looking at people and their memories and their life over a period of time. The kind of urbanization, forming of cities and things like that, filmed there, and that film was brought into the stage where the contemporary dance and this traditional material came together. That juxtaposition was also very beautiful. Beautiful. कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपके बारे में कहा है. आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा. हेलो जयचंद्रन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर से हम इतने दिनों के बाद बातचीत कर रहे हैं. आपको याद है हम कोई 10-12 साल पहले मिले थे जब आपका काम जर्मनी में आया था और हम एक फेस्टिवल में थे इकट्ठा जिसको मैंने क्यूरेट किया था. तो आपने एक डांस को एक ऐसी एनर्जी दी है, अलग अलग किस्म के आपने प्रयोग किए हैं डिजिटल फॉर्मेट में और डिजिटल साउंड एंड म्यूज़िक को इस्तेमाल करना, लाइट्स को इस्तेमाल करना. तो वो चीज़ें मुझे लगता है हम सबको जो थिएटर में हैं एक डायलॉग बनाने का मौका देती हैं और एक्साइट करती हैं और एक इंथ्यूजियाज़म भी बढ़ता है कि नई लैंग्वेज, नया प्रयोग, नई भाषा डांस में निकल के आ रही है. तो जयचंद्रन, ऑल द वेरी बेस्ट और वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स कि आपका काम इसी तरह से फुल ऑफ एक्साइटमेंट और एक न्यू डायरेक्शन लेता रहे जिसके कारण हम सब की बातचीत एक दूसरे से और बढ़े. जयचंद्रन सर से मेरी पहली मुलाकात बैंगलोर में हुई थी. उन्हीं के द्वारा स्टार्ट की एक कोर्स में मैं बैंगलोर गया था एंड इन्होंने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. इनका डांसिंग स्टाइल, इनका कोरियोग्राफी स्टाइल बहुत ही यूनिक है. इनके आइडियाज़ कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत रेलेवेंट हैं.
इनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं आर्ट्स एंड एजुकेशन में या डांस डेवलपमेंट में, कंटेम्प्रेरी डांस के फील्ड में इन्होंने बहुत रिसर्च किया है। इनका कोरियोग्राफी स्टाइल इज़ वन ऑफ इट्स ओन इन इंडिया एंड उन्होंने हमें मेरे जैसे काफ़ी सारे यंग इंडियन डांसर्स को इंस्पायर किया है। एंड आपके आर्ट्स एंड एजुकेशन के इनिशिएटिव्स, डांस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड आई होप कि you keep us in your blessings all the time and please continue your good work. क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? मैं बहुत खुश हुआ. Very well said, and I think he is a very dedicated student and very hardworking and talented. You have been also associated with Bollywood and Tollywood also. In a small way, In very a small way. Okay. So what were the projects? Well, recently we did a production with Kamala Hassan called Uttama Villan, and they asked me to he asked me to choreograph a couple of the songs for the film, and it was very special to work with him. He came to the studio, rehearsed quite intensely, and put in a lot of time and effort, and also knows quite a lot about dance and music and all of those things. So that was very enriching experience for me, and it was very enjoyable too. With Kamala Hassan. Kamala Hassan. And also I did recently one Hindi film with which is Bijoy Nambiar was the director, and Amitabh Bachchan was acting in it. You also organized a dance festival once in a year. What was that? The Artakalari India Biennial, it happens every 2 years, and this festival, ये तो South Asia का बड़ा फेस्टिवल है, most important festival है. This is the festival where around 25 countries take part and more than 200 artists from all over the world. And this festival not only present the best work from around the world, but also gives a chance to young and emerging choreographers, bring them up to an international stage. And we also conduct a choreography residency to help young choreographers to find their feet, and that young choreographers will get mentors, really experienced dance artists to mentor them in their process. And that has resulted in fantastic productions as well. आप जैसे कॉन्टेम्प्रेरी डांस लेकर आए, आधुनिक नृत्य को आप लेकर आए, इसमें आपने बहुत से नृत्यों का समावेश भी कर दिया, इमर्ज कर दिया आपने बहुत सारे नृत्यों को. जो डांस मास्टर्स हैं, मास्ट्रोस हैं, उनका क्या कहना रहा? Well, when I performed in Chennai, and it was very special for me. It was in Music Academy. Whenever I go to perform, mostly I do it in Music Academy. That's a very historical space. That is where the first time the word Bharatanatyam was coined. And for example, when I was performing there, my own teachers, Dhananjayan, so they came and blessed. They said it was fantastic and beautiful. So was Professor Chandrasekhar. And Professor also Balagopal sir, all from Kalakshetra. So they are all from the very classical tradition. But they, one of the great thing about these masters are, when they see something good, they always appreciate. And generous, very generous. So I remember also doing some research work with Kirpadathil Kumaran Narayan. He was 88 at that time. And then this Aminur Madhava Chakyar, the legendary Kudiyattam artist. So they were so fantastically generous. Kirpadathil Kumaran Narayan, he used to make this coffee for me with Horlicks. And it is his special coffee. And he said, I know you are going to do something. And I feel so humble. These great masters, for me, they are like Beethoven or that kind of we in our country we don't have that facility to recognize them. So it's a contemporary dance or contemporary literature or contemporary music or contemporary cinema is the expression of our time. If we do not have contemporary art, we cannot make sense of contemporary experiences. Then we get alienated from our life. That is not a life worth living. So for me, to value tradition, to enrich our tradition, we need to inject new energy into it, new ideas into it. And contemporary dance is enriching and adding to our tradition.
And it is not in competition with anything. It is not in against anything. It is again a complementary thing. So that is something which we have to celebrate. चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने हिंदी फिल्में कभी देखी? देखा हूँ. गाना कौन सा पसंद है? I love that song because I think it reminds me about a time where in our cities, you know, this kind of childhood were valued, family values were valued. You know, those, because in this production, there was a resonance of that. So I decided to use a tiny section of that. The words I can't remember now. आ चल के तुझे? आ चल के. हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। जयचंद्रन जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको, तो बेहद शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।